और आपका आज वीडियो में स्वागत है। और क्योंकि मॉनसून स्टार्ट हो चुका हुआ है तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं खूबसूरत नज़ारे। कहाँ लेकर जा रहे हैं बताएंगे? मुंबई से लोनावला लेकर जा रहे हैं, वो भी विस्टाडोम कोच में, और वहाँ पे लोनावला का फेवरेट फूड भी आपको दिखाएंगे। वाओ, तो चलिए चलते हैं लोनावला। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का वीडियो लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। This is giving me Euro rail vibes, except that I'm eating vada pav and this is actually not Switzerland, it's Maharashtra. वाकई में कह दिया स्विट्जरलैंड। मुझे भी ऐसे ही लग रहा था क्योंकि स्विट्जरलैंड की जरा वीडियोस देखते हो ना, ऐसे ही आपको देखने को मिलता है यार। खाना भी अच्छा कितना मजा आता है, मौसम, ग्रीनरी। क्या है वाला सेव? और ये क्या है? सेव नहीं थे, मेरा है मैं इससे बात था। मिर्च के ऊपर सेव पड़े हुए थे ना। सोया Hi everyone and welcome to SugarSpiceNice. My name is Shweta and in this video I'm actually taking you with me to Lonavala. It's going to be a very different Lonavala journey because for starters I'm going by train and it's not just a regular train, it's a VISTADOME express. So come on, let me take you with me on this journey. So this here is the VISTADOME coach. I can see like literally glasses everywhere. I'm just super excited if you guys can't already tell because I've never done a journey like that. So this is actually like the viewing part, and once the train starts moving, all of the scenery is right here. But for now, let me show you how the train looks like from inside. It's like a dedicated area to put luggage. And here we have the wash basin, and that is the loo area. So found my seat and I'm pretty impressed with what I see so far. Every seat has this footrest area, a reclining button. It's nicely cushioned. So here there is actually a lever which you can press and turn the entire seat. Enjoy the vista view. And we are off. Thankfully it's raining today and I hope it's raining in Lonavala also because then we'll be able to enjoy all of that greenery and soak in the fresh air. Wow. Train has started and I have just moved my seat around. There's still no like worthwhile view, but just the freedom of being able to do this is something else. One thing that I discovered they have is this airplane style pull-out table. I'm waiting for train food. I don't know. I've been dreaming about cutlets since a while. I just hope they come soon. We've crossed a lot of the main stations. The next one is Kalyan, but at least the view part has started a little bit. And uske pehle to we were just seeing buildings and stuff, but here I can see a mountain in the distance over there covered with clouds. It's time for train ka cutlet. I think the joys of eating cutlet bread in a train are so underrated. 50 रुपए की प्लेट सही है। I also enjoy the omelette in a train. It's one of the few times that I enjoy eating egg outside. Omelette is very simple. It's got dhania, coriander, mirchi and onion. This in between buttered slices of bread and a dip of ketchup. अच्छा देखा इंडिया में मैगी और केचप बहुत ज़्यादा खाई जाती है ना। Actually, that viewing deck there gets really crowded, but I totally recommend coming by the door and enjoying a bit of the mountains and a bit of the clouds. Standing on a train ka door hits different. Let me know if you agree in the comments. Overall, the VISTADOME coach is definitely a win, especially in this weather because the amount of greenery around is just stunning, and it is like an experience. So if you want to do a slightly different kind of trip to Lonavala or Pune, then I recommend this. A lot of people told me that the views get better after Lonavala, but I think I'm pretty satisfied with what I've seen so far. But in case you guys want to see a full VISTADOME experience to Pune, then leave that in the comments below. Chai. Enjoying chai with this greenery, it's just such a soothing experience. Next halting station, Lonavala. लोनावाला? गलत बोल
Just stopped at Karjat station, and you guys know what Karjat is famous for? Batata vada. It's mirchi also, but I don't think I'm having that. The only way to describe this experience is batata vada with a view. I mean, I'm just in awe of how beautiful this route can get during this time of the year. The batata vada is actually nice and fresh. There's no chutney or anything, but flavor is good. According to me, the views get better once you've crossed Karjat, and then a lot of tunnels are passing. So basically there comes a point where like every 2 minutes there's a tunnel. The view right after the tunnel is stunning. You can see streams of water, you can see so much lush greenery, mountains, and if you're here in the rainy season, lots of clouds. It'll almost feel like you're amidst the clouds, and just enjoy this view from different parts of the train. Right next to your seat, go to the back where the actual viewing deck is, and even check your neighbor's seat because that side might be getting a slightly better view. So that was my VISTADOME experience from Mumbai to Lonavala. This train goes ahead till Pune. I've just like gotten off the train, and let's see where we go. So bye bye VISTADOME. We're here at Buwaji Misal. I'm coming here after so many years, and I think the last time I came here was probably 10-12 years ago, and this place was tiny at the time, but right now I feel like it's expanded so much. This place always brings back memories for me, and if you have memories from Buwaji Misal, then make sure you hit that subscribe button because that means you and me, we're a vibe baby. Come. So this is where all of the magic happens, the misal assembly and the vadas being fried and stuff. This is the kitchen. I'm going to be heading inside now. बटाटा कोथिंबीर आणि ठेचा हिरव्या मिरचीचा ठेचा असतो अद्रक लसूण मिक्स करायचं हळदी मारून तडका मारायचा धनिया टाकायचं मस्त होतं. So right now she's making the batata vada ka masala, and she's been explaining to me in Marathi very sweetly what all goes inside. Batata, adrak lasan, mirchi, kothmeer, kadi patta, and mix. Then गोली बना के उसको फ्राई करने का, and batata vada is ready to eat. जैन मिसल. तो इसमें खाली मटकी और मसाला. Behind me you can see kanda bhaji being fried. Just look at the size of the bhajia. It is massive and it is looking super crispy, and there is like so much around here. See that? Let me show you the misal plates that are ready over there. This is the misal assembly area, and you can see the big bartans in which the misal is there. थोडंसं वैसे घेतलेलं तळलेली आहे ती आणि पूर्ण वरती तरी आहे. डिशेस कैसे लाल घेतली का ही तरी थोडंसं हलवलं का मीडियम सादा. अच्छा ये सादा तीखा नाही. हाँ लाल वाला एकदम तीखा. एकदम तीखा. ये देखो लाल वाला. हे बघा. This is the spicy part. अच्छा spicy. The light color floating on top is the non-spicy part. 3 प्रकार. एक मटकी में 3 प्रकार. सादा मीडियम तीखा. Different types of misal available here. Cheese, butter, paneer, regular. I think I'm going to stick to the regular one because that's like the tastiest in my opinion. So while we were inside, it was crazy hot, and all of that heat is for indulging in this plate of misal. I have been coming here right since when I was in college, and this is the first time I actually like gone inside the kitchen and done all of this video and all, but it was a different level of experience. For me, misal generally is on the spicier side, so I'm not going to comment on the spice at all, but I'm very partial to this misal. Like I have a lot of memories and nostalgia attached to it, and I think a lot of us Mumbaikars will have that. So in case you also have memories of this place, then let me know a little bit about that in the comments below. Needs a tiny bit of lime. There's also a little bit of pizza here. I'm going to try having just a little bit with the pav, because I really like the flavor of this. It's too fiery for me, but
What I like about the taste of the misal here is that the spice level is very manageable. Another thing that helps tone down the spice level is the addition of potato inside. There is a lot of mashed potato, and even the save is very generously added. So I feel like that kind of soaks up all of that hot flavor. बहुत सही है. बारिश में ऐसी जगह बहुत मजा है. After Bhuvachi Misal, we took a rickshaw and we landed here at Lonavala Lake. And right now, the view behind me, the green mountains, like it's just looking so picturesque. And the opposite side is actually even more prettier because that is where the actual lake is. I think it's a lake. Somewhere I read that this is a dam, but to me it's seeming more like a lake. So just look how serene that is. So here there seem to be a few activities. You can enjoy butta, probably even a horse ride, or you can just sit and enjoy the fresh breeze. I mean, like there are cars passing and autos and all going and stuff, but still there's a certain level of calmness here. I haven't felt this fresh breeze in a really long time. Maybe walk kar sakte. Any trip to Lonavala in this season is incomplete without seeing a waterfall, so I'm glad we checkboxed that. Here, that stream of water and this fresh air and greenery, I think I'm a different person today. We are at such a beautiful point with such cool breeze and so much greenery to look for. It's but natural that I eat a plate of corn bhajia. So what I'm doing is taking a dip of the ketchup and of this garlic chutney, making my own little spicy dip. Not spicy, chatpata dip. I feel like these can be a little bit more crunchier than kanda bhaji itself, simply because corn itself has a very chewy, a very juicy texture, and that when fried with besan, it's a different level of crunchiness. I was feeling bad that I didn't try kanda bhaji in Bhuvachi Misal, but at that time I was so full. Now after walking around a little bit, this bhajia is feeling really good. That plate of bhajia I just bought from this shop here off the Lakeview Point, and the price of it was 80 rupees. I feel it's a little bit steep considering the misal that I had was 70 bucks, but it was quite a big plate of bhajias, so I think it's okay. One auto ride later, we are here at Mapro Garden in Lonavala. This place has become a must visit for me whenever I am in Lonavala, simply because it reminds me of Mapro Garden in Mahabaleshwar. Let's go check out the store, chill for a bit and enjoy something yummy. I want to try something new, so I'm going to go around to their sampling counters. Classic butter cookies. I've never seen butter cookies at Mapro, and somehow I feel like every time I come here, they have like new stuff. I tried mojito. Next I'm trying the green apple one. Wow. I better move from here, otherwise I'm going to be stuck at the tasting counter. So I'm going to buy a few things and see you guys in a bit. This pond area actually specifically reminds me of the Mahabaleshwar wala Mapro. Even they have like this chotu area. And there behind is the fountain. I think this waterfall sort of a thing is very, very symbolic of Lonavala, especially in this weather. Any visit to Mapro Garden is incomplete for a foodie like me without visiting their food area. And they have a lot of different things to eat. There's pizza, there's grilled sandwich. In the winter, they have fresh cream with strawberry, and in the summer, they have fresh mango version of that same thing. I don't know what we're going to find now, but I'm keen to go and check it out. स्ट्रॉबेरी सीरप भी जो कितना डाला जा रहा है। ओह, alright you guys, there can't be a trip here without strawberry and fresh cream. So कितने लगा हमें? That I'm very, very excited to go to whenever I'm in Lonavala is Cooper's Fudge. Now this is like the best fudge of Lonavala, and there's no doubt about it. Anybody else will tell you like there are ones that are way older, way better and all, but no,
take my word for it, Coopers is the best. And they recently like started this whole new big outlet and stuff, and it is so fancy, especially for older customers like me who've seen their tinier shop in the market area. This feels like a different world. So let's head inside and get some fudge. So for me, there's never any confusion when it comes to Coopers. It's always chocolate walnut fudge. So here I've got my boxes and another box for some of my friends. Come, let's go. So this is like the new shop, and I can see upstairs they are prepping to start a cafe or a restaurant. I think it's going to take like 5 to 6 months more, but it'll be interesting when that happens. If there's something that you cannot leave Lonavala without, it's chikki. We all love chikki in some form or the other. And while there's this like one brand which is famous all through Lonavala, Maganlal, I actually prefer this really small humble shop which has been around since 1975, very close to the Lonavala market. It's called Rupam Chikki. Let me take you inside. It's a small shop. I have some set favorites from here. I really enjoy the Malai Crush Peanut Chikki from here. I love their potato wafers. They are super thin, like wafer thin. They also let you taste a few chikki flavors depending on whatever is available with them. But the stuff here is fresh and I vouch for it. This is my ride here in Lonavala. I've been roaming around in an auto, very free, not driving, for a change, enjoying it. And I was fascinated with this auto because it's the first time I'm seeing an auto with a door. How cool is that? Alright, the door is shut and I'm headed to my next stop. So see you there. Back to my original ride. I'm actually also going back to Mumbai in the Vistadome. I thought let's just make this like a complete experience. Left at about 4:30 from Lonavala station, and I just hope it doesn't become too hot. It doesn't seem like it's looking nice and green again. That was my Vistadome experience. The views that I had in the morning and right now even while coming back was so beautiful, but right now we can just see buildings, which just shows you I am back in Mumbai and I'm going to be getting off at Dadar anytime soon now. So I just thought I'll give you guys a gist of my entire trip. So firstly, this is the Deccan Express. That's the one that I took. The last 3 digits of the train are 007 and the Lonavala to Mumbai is 008. When you want to book a Vistadome, you have to select EC as your seating option. That is, I think, executive chair car or something like that. So that is the Vistadome coach, and it's usually either in the beginning of the train or in the like way end of the train. So find all of that out and select it. And I booked my tickets and stuff from the IRCTC website. All of the other details which I think I'm missing right now and might help you out, I'll leave those in the description box below. And I'll also leave the details of all the places that I visited in Lonavala in the description box below, so even you can plan a nice fun day out there. That is really it from me. Don't forget to hit the like button, share this video with all of your friends and family, and subscribe to my channel, and I'll see you in my next video. Bye. भाई मुंबई से लोनावला के सफ़र की अगर बात की जाए तो बारिश वाले मौसम में तो वैसे ही सफ़र जो है विस्टाडोम में बैठ कर जब बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि भाई जब आपको ऊपर नीचे से सब कुछ साइडों से नज़र आ रहा हो ना तो सफ़र आप ऑटोमेटिकली इंजॉय करते हैं। बिल्कुल। और आज के ब्लॉग की मुझे स्पेशलिटी ये लगी कि आप जल्दी जा सकते हैं और जल्दी वापस आ सकते हैं। हाँ, एक दिन में। मुझे नहीं पता था कि लोनावला का ट्रिप आप मुंबई से इतनी जल्दी में कर सकते हैं। वैसे मुझे भी आइडिया नहीं था, लेकिन मे भी हो सकता है ट्रेन से आप जाते हैं तो जल्दी आप पहुँच जाते हो। मे बी, बट ये है कि फिर भी मौसम बहुत क्विक है यार। यानी कि देखो, आप गए हो, आपने डिफरेंट जगह देखी हैं। अगर मान लो हम लोगों ने कोई 4-5 जगह तो देख ही लिए हैं ना, तकरीबन, ठीक है ना, और फिर वापस आना। खैर एनीवे, जब स्टार्ट होता मुंबई से सफ़र और उस टाइम पर बारिश हो रही होती है तो बहुत ही एक अच्छा व्यू लग रहा था। मुझे लगता है कि बारिश इटसेल्फ एक मेडिटेशन है, क्योंकि आप उसकी आवाज़ और उसको देखना और सामने ग्रीनरी देखना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम पहाड़ों वाली साइड पर जाते हैं और ग्रीनरी देखते हैं तो पता नहीं क्यों आप इंटरनली बहुत काम फील करते हो। आपका माइंड इतना ज़्यादा सुकून में होता है
कि आपको लग रहा होता है कि शायद आप किसी और दुनिया में आ गए हो। यार मैं कहता हूँ बारिश के साथ साथ जो है ना, जब आपको जो है वो साफ खिड़की मिल जाती है ना, तो आपके सफर को और चार चांद जो है वो लग जाते हैं, क्योंकि आपको जो है वो फिर क्रिस्टल क्लियर जो है सब कुछ नजर आता है। मुझे तो ऐसा फील होता है जब कभी ऐसा हो, क्योंकि अभी मैं अगर अपनी लास्ट मेमोरी की बताऊं ना, तो मेरी लास्ट मेमोरी कश्मीर है कि जब हम लोगों ने लास्ट डे में वापस आना था और उस दिन बहुत बारिश हुई थी अर्ली मॉर्निंग में, और मिस करते उस टाइम को। पहाड़ों पे ऐसे क्लाउड्स बिल्कुल नीचे आ गए, तो वो बारिश की आवाज और वो सारा सीन अभी भी ना मेरे माइंड में कहीं ना कहीं पर है यार। तो बस जाती है, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं मैं कुछ ना रियल में नहीं देख रही, कहीं और किसी दुनिया में। यार जो आप कह लेंगे आप अपनी आम जिंदगी से हटकर जो एक टूर मार के आते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं ना, तो लिटरली वो काम जो है ना आपको ख्वाब भी लगते हैं, वो ऐसे जैसे रियलिटी से परे की एक जो है चीजें होती हैं। मुझे मेरे साथ भी लिटरली ऐसे होता है कि जैसे जिंदगी में बहुत सारे जो है काम किए हैं, लेकिन अब आकर ऐसे यार वो एक ख्वाब था। वैसे मौसम अब तुम्हारे से अगर मैं पूछूं, तुम्हारे लिए जो हम फॉरेन ट्रिप पर गए थे वो या फिर कश्मीर वाला ट्रिप, कौन सा तुम्हें ज्यादा अच्छा लगा? यार अगर मैं खूबसूरती की बात करूँ ना, दोनों की अपनी जो है वो खूबसूरती। तुम्हारे लिए मेमोरेबल कौन सा, मैं ये पूछ रही हूँ। मेरे लिए दोनों ही जो है वो मेमोरेबल हैं। भाई मैं ये नहीं कह सकूंगा कि भाई एक जगह जो है वो खूबसूरत नहीं थी, दूसरी बहुत खूबसूरत थी, हर जगह की अपनी खूबसूरती है। नहीं, आपकी ना कुछ मेमोरीज बन जाती हैं। सो अगर मैं उस लिहाज से बात करूँ ना, तो मेरी मेमोरीज कश्मीर वाले के साथ इसलिए हैं क्योंकि पूरी फैमिली हमारी गई थी, तो आप जब पूरी फैमिली के साथ जाते हो ना वो एक अलग ही मजा था। हालांकि आप जब पूरी फैमिली के साथ जाते हो ना बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, मूड बनते हैं, कुछ भी मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा आपको जो देखने को मिलते हैं। बेशक आप दो लोग भी जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बीच में मूड आपका खराब होता है, लेकिन कंप्रोमाइज से जो है वो दो लोग जाए ना तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि दो लोग होते हैं, एक खराब है तो दूसरा भी इम्पैक्ट होता है। ज्यादा लोगों में से हो ना तो किसी एक का तो अच्छा होता है ना, तो आप जरा बाकी सारे को छोड़ो, जो एक है उसके साथ जो है लगे रहो। लोनावला की अगर मैं बात करूं तो भाई मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा है। इवन के मिसल पाव डेफिनेटली वो तो एक बहुत ही मैं कहूँगी कि स्पेशलिटी है महाराष्ट्र की। बट उसके साथ साथ जो जहाँ पर वो एक नदी वाली साइड पर गई थी ना, मुझे जो ब्रिज था जो बंद हो चुका था, मुझे उस तरह के ब्रिज बहुत अच्छे। ये पुराने ब्रिज जो है वो अक्सर यहाँ पे भी आपको देखने को मिलते हैं रोड साइड पे, खासतौर पे जीटी रोड की अगर बात करें तो वहाँ पे आपको पुराने ब्रिज व्यू नहीं ऐसा मिलता ना, वो व्यूज लाजमी बात है। फिर वो हर जगह की फिर वही बात आ गई, खूबसूरती जो है वो अलग अलग है, तो आपको उस तरह का लिटरली व्यू नहीं मिलता, लेकिन वो ब्रिज जो है आपको खूबसूरत लगते हैं क्योंकि उनकी शेप जो होती है ना वो कुछ इस टाइप की बनी होती है भी है। और साथ में मौसम क्योंकि वो बहुत पुराने होते हैं, बारिश और वो जो ग्रीन सी फंगस लगी होती है वो भी उसको खूबसूरत जो है वो बना देती है। लोनावला की बात कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि बाहर बारिश स्टार्ट हो गई है क्योंकि मुझे बारिश की नहीं, मुझे लगता है वॉशरूम में किसी ने हल्का खोला है। वाह ओके, मैं भी हो सकता है बारिश भी हो रही हो, मौसम जब बारिश वाला हो सकता है, ये तो बाद में पता चलेगा। तो खैर उसके अलावा एक और चीज़ जो है मुझे अच्छी लगी कि ट्रेन में खाना जो मिल रहा है विस्टाडोम कोच में वो बहुत नॉर्मल रेट्स हैं। आप ये नहीं कह सकते कि भाई बहुत ज़्यादा जो है वो चार्ज कर रहे हैं। इंडिया में मैंने वैसे देखा कि खाना जो है ना वो आपको बहुत सस्ता मिलता है यार, मतलब वो कहते हैं ना तुम रज के रोटी खा सकते हो, वो वाला हिसाब है कम पैसे। अभी लिटरली ये मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। अब यहाँ पर जो है ना पहले जब खाना सस्ता होता था बाहर तो 2-3 दोस्त यार मिलके जाके खा लेते थे, लेकिन अब महंगा इतना हो चुका है ना कि अब जो है ना कोई पूछता ही नहीं कि कहीं जाना कि नहीं जाना। जाहिर सी बात है अपने अपने बजट की सही बात है, लेकिन ये है कि ओवरऑल मैं कहूँगी ये बहुत ही मजा आया एंड आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। आप में से कौन कौन लोनावला गया है? वैसे मैं बस एक बात पूछना चाहती हूँ, ऑल्दो मैं बहुत श्योर हूँ कि इसको लोनावला ही बोलते होंगे, लेकिन ट्रेन में लोनावाला भी हाँ तो वो जरूर बताइएगा। अच्छा एक और चीज़ वीडियो में जो 2 चीज़ें, एक जो वो डिपार्टमेंटल स्टोर जो बहुत बड़ा था वहाँ पे गई थी, वहाँ पे जो चीज़ें वो टेस्ट करी थी वो डिफरेंट थी काफ़ी, और जो हमें समझ नहीं आई जहाँ पर वो कुछ ड्रिंक थी कोई वो नहीं हमें समझ लगी। फिर उसके बाद जो है जो वो कॉर्न्स की जो भाजी बनाई हुई थी वो भी काफ़ी ज़्यादा नई थी, काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल 100% नई थी। मिलते हैं यहाँ पर पकोड़े डाल के में कॉर्न्स, हाँ या पॉपकॉर्न्स मिलते हैं। एनीवे गाइस ओवरऑल बहुत मजा आया। आप जरूर बताइएगा लोनावला आप कौन कौन जा रहा है या होकर आया है, वेदर कैसा है वहाँ का, जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ कमेंट सेक्शन में। लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।